everyone, Assalamu alaikum. This is Mohammad Khan Jafri, and we are going to discuss another topic from the healthcare financing, the balance sheet for healthcare institutions. In this video, we try to learn how the balance sheet works and हम उसको कैसे evaluate कर सकते हैं, उसके बारे में कैसे जान सकते हैं. What is the balance sheet? The first topic is this. Balance sheet is the one of the financial statement. There are a lot of financial statements are in the literature. और उसमें जो बेसिक एंड फंडामेंटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दिस इज कॉल्ड द बैलेंस शीट. एंड दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट is basically consist on three main things. Number one is the assets, second is the liabilities, and third is the equity. And equity mean whatever the capital funds was there. तो हमें liabilities, assets और equity के बारे में जानने की भी जरूरत है. Although ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तो आपकी बैलेंस शीट बनती है. What is the main equation? What is the main equation? Equation is this: total assets are equal to liabilities plus equity. Equity and liabilities when add together, तो वो दोनों बराबर होने चाहिए किसी भी बिजनेस के टोटल एसेट्स के. तो उसके जितने भी एसेट्स होते हैं वो जो है यकीनन किसी न किसी लाइबिलिटीज से फाइनेंस्ड हो रहे होंगे या इक्विटी से फाइनेंस्ड हो रहे होंगे. ये एक जब हम डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे बैलेंस शीट की तो वहां से हमें इस बात के बारे में अंदाजा होगा. Apparently, one table is given in front of you and you can see that के assets के अंदर हम major category जो बना रहे हैं वो है current assets and long term assets. And when we add up both type of the assets, so it gives you the total assets. And on the other side, we are basically listing all the liabilities and equity statement. And equity statement shows that कि उसमें आपके पास liabilities के अंदर current liabilities होंगी, long term liabilities होंगी और equity का status होगा. When we calculate, when we add up all these three components, so it will become the total liabilities and equity. And according to the financial rule, according to the financial balance sheet, all the assets must be equal to the assets plus liabilities plus equity. So ये जनरल आइडिया आपको देने के बाद हम टर्म्स स्पेसिफिक होना चाहेंगे and we will try to discuss each and every term that is basically used in the balance sheet components. उसमें number one, liabilities. Liabilities represent the claim against the assets of an organization that are fixed by the contract. Means liabilities जब भी होती हैं, जब भी आपको कोई borrowing होती है, जब भी आप कोई अपने you are liable to pay something, तो वो किसी न किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट होगी और it is should be the backed by some specific asset. अब जैसे ये मिसाल देते हैं कि some liabilities are claimed by the workers for unpaid wages and salaries. अगर आपका एक हॉस्पिटल है, उसमें आपके पास डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, दूसरी चीजें काम कर रहे हैं, तो अगर आपने जो उनकी सैलरीज पे करनी है मंथली, तो इट इज द वन सॉर्ट ऑफ द लाइबिलिटी. सेकेंड ये हो सकता है कि टैक्स अथॉरिटीज को आपने अनपेड टैक्सेस पे करने हैं, तो दिस इज आल्सो द लाइबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल. इफ द हॉस्पिटल इज अ फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो उस पर टैक्स लागू होगा, वरना नहीं होगा. लेकिन अगर जिस पे भी टैक्स लागू होगा उसको टैक्स इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ द लाइबिलिटी. Vendors that grant the credit when the supplies are purchased, yes, a lot of supplies, lot of material are required for the hospital management. उसमें हम देख सकते हैं कि मेडिकल मटेरियल होता है जो कि डे टू डे वर्किंग में यूज होता है हॉस्पिटल क्लिनिक मैनेजमेंट में. तो उसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि वो जो तमाम मटेरियल होता है वो जरूरी नहीं है कि कैश टू कैश बेसिस पे लिया जा रहा हो, वो क्रेडिट बेसिस पे लिया जा रहा होता है. एंड देन द सर्कल्स मूव एंड उसमें हम देखते हैं कि जो आपके पास क्रेडिट है वो भी आपने जो सामान आपने लिया हुआ है, यू मस्ट हैव टू पे बैक the amount of those amount that material that you have used in your routine working. तो अगर आपने वो क्रेडिट्स को आपने वो पेमेंट पे बैक करनी है तो definitely it is also the liability. And even you didn't pay that value, लेकिन आपको करनी तो है, तो you will count that value in the account of the liabilities. तो हमने तीन एग्जाम्पल दी जो कॉमनली एग्जिस्ट करती हैं. तो लाइबिलिटीज का कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया कि वॉट एवर थिंग वी हैव टू पे बैक, और हमने उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एसेट ले लिया था, कोई चीज ले ली है, कोई सर्विसेज ले ली है, तो ये हमें उसकी अमाउंट पे करनी है. लेकिन नाउ वी अंडरस्टैंड दैट कि लाइबिलिटीज कितनी किस्म की हो सकती हैं. लाइबिलिटीज की जो मेजर कैटेगरीज हैं वो दो किस्म की हैं. वन इज द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, अदर इज द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. एंड
in the literature, in the financial management, we do not use the word of the short-term liabilities. We say current liabilities, current liabilities and the long-term liabilities. So let's understand the concept of the current liabilities. Current liabilities में क्या होता है कि current liabilities include the liability that must be paid within one accounting period. अब accounting period usually is called the 1 year. A 1 year usually is called the calendar year. Let's suppose it depends on the firm. लेकिन अगर फर्म ने अपना अकाउंटिंग पीरियड एक कैलेंडर पीरियड ईयर को डिक्लेयर किया हुआ है तो जनवरी टू 31 दिसंबर तक उसको अपनी पूरी वर्किंग करनी है. तो करंट लाइबिलिटीज मीन a liability that you must have to paid off, you must have to vanish out within 1 year. So must be paid within 1 year, within one accounting period. तो अगर ऐसी तमाम लाइबिलिटीज आपने जैसे आज लिया और आपको 6 महीने बाद उस कर्ज की अदायगी करनी है तो वो आपका कहलाएगा करंट लाइबिलिटी में शुमार होगा. So now another term, it's very important term from the balance sheet point of view is the account payable. अब account payable में क्या होता है कि accrued expenses जो होते हैं यानी a business liability that seems from the fact that some obligations such as wages, taxes, non-paid immediately and after obligation are created. ये मैंने जो ऊपर आपको एग्जांपल दी जिसमें वेजेस थी, नॉन अनपेड टैक्सेस थे या कुछ सप्लाईज के पैसे थे जो कि आपको विद इन 1 ईयर बल्कि आपको मंथली बेसिस के ऊपर पे करने होते हैं. तो दीज आर द बेसिकली अक्रूड एक्सपेंसेस नंबर वन. एंड अक्रूड एक्सपेंसेस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द अकाउंट्स पेएबल यानी कि यू मस्ट हैव टू पे. तो जो अकाउंट्स पेएबल है बेसिकली वो आपकी भी लाइबिलिटीज हैं और ना सिर्फ लाइबिलिटीज हैं बल्कि वो आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं. और करंट लाइबिलिटीज क्यों है? बिकॉज कि उनको आपने विद इन 1 ईयर पे करना है. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेट. लॉन्ग टर्म डेट एज इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बाय इट्स नेम कि ये लॉन्ग टर्म है. लॉन्ग टर्म में जो हमने करंट लाइबिलिटीज की बात की थी, so the current liabilities are basically working within a one accounting period. So keeping the same concept and same tradition and same pattern, we can say that the liabilities you must have to pay, the liabilities that require the period more than 1 year, mean आपको एक से ज्यादा साल के अंदर जो पे करनी हो वो आपकी एग्रीमेंट्स, these agreements are called the long term debts. In accounting, the long term liabilities are the company's financial obligations that are due to more than 1 year in the future. आप कह सकते हैं कि you have taken the loan for the 3 years. Someone has granted the liability or a specific borrowing up to 5 years. जैसे यहाँ पर एक आपको शेड्यूल पेमेंट दिया गया है कि जब भी आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लेते हैं तो आपका शेड्यूल डेवलप होता है, शेड्यूल प्रिपेयर्ड होता है. शेड्यूल मीन दैट कि it decided that what you are going to pay back in the first year, in the second year, in the third year, up to n year, mean whatever year you have decided that in that period you will complete you will completely pay back your liabilities. जैसे यहाँ पर एक 3 साल की एग्जांपल दी गई है. 3 साल की अगर आपने लोन लिया है तो you are going to pay some interest amount, profit amount on your borrowing. जैसे पहले साल में आप कह रहे हैं मैं 30,000 जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट दूंगा. लेकिन लेट्स सपोज इफ यू हैव टेकन द बोरोइंग ऑफ द 1 मिलियन रुपीस, 10 लाख में से 1 लाख प्रिंसिपल अमाउंट आप रीपे कर रहे हैं. मींस if your total outstanding is 1 million rupees, so you are going to pay back 100,000 as a principal amount payback. तो आपका जो लोन की आउटस्टैंडिंग रह जाएगी वो रह जाएगी 9 लाख रुपीस की, 900,000 की. और आप जो 30,000 जो यू आर गोइंग टू पे बैक, बेसिकली ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट है जो वो अर्न कर रहा है आपने क्या कहते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के मुताबिक वो अर्न कर रहा है. तो in principle you are going to pay $130,000 in a 1 year. और अब the next year your interest value is low because you have paid back the principal amount as well. तो अब जो interest count हो रहा है वो 9 लाख पे हो रहा है rather than the complete amount that you have taken earlier. तो अब आपकी जो यकीनन इंस्टॉलमेंट बनेगी, शेड्यूल बनेगा, वो बनेगा 120,000 का. एंड ग्रेजुअली दैट अमाउंट, टोटल पेमेंट अमाउंट विल बी कंप्लीटली जीरो. मीन ग्रेजुअली यू आर सीइंग दैट कि ये आपकी डाउन होती जा रही है. 130,000, 120,000, 110,000 एंड देन इन 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर ये अमाउंट जो है वो ऑलमोस्ट आपकी टोटल पेमेंट जीरो हो जाएगी. इसका मतलब ये कि पेमेंट जीरो का मतलब ये कि यू हैव रिटर्न बैक द कंप्लीट लोन along with the
interest payment and principal amount. तो जब हम liabilities को discuss कर रहे थे तो we found there are two types of the liabilities, the current liabilities and the long-term liabilities. Here we also have two different types of the assets, same concept, the current assets and the long-term investments, long-term assets. So current assets को explain करते हैं पहले. It is an expected to be converted into the cash within one accounting period. ये बड़ा important सी term है. एक term होती है finance में use liquidity. Liquidity just mean the amount at a time is required to convert in an asset into the cash. It is called liquidity. Sometimes we say that the assets are highly liquid. Assets are highly liquid. Highly liquid mean they can easily transform into the cash amount. अगर मेरे पास कोई बॉन्ड है, मैं मार्केट में जाता हूँ और कोई भी मुझे उसके अगेंस्ट उस बॉन्ड के मुताबिक पैसे दे देता है, तो आई कैन से दैट माय इंस्ट्रूमेंट, माय फाइनेंशियल एसेट्स इज हाईली लिक्विड. समटाइम आपने देखा है कि हम लोग बैंक में सेविंग इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां पर ये होता है कि इफ यू आर फ्री टू विड्रॉ योर अमाउंट, आप जब दिल चाहे पैसे निकाल सकते हैं. तो दैट्स मीन आवर इन्वेस्टमेंट, आवर एग्रीमेंट इज हाईली लिक्विड. But sometimes you understand that you purchase a bond, you purchase a financial agreement, you purchase a financial security, or that is called the fixed term, and you cannot withdraw your amount before the 3 years, before the 5 years. And if you withdraw, so you must have to pay some penalty. इस तरह की चीजों में तो इसका मतलब क्या है कि ये एसेट्स लिक्विड तो है बट हाईली लिक्विड नहीं है. एक बात. थर्ड थिंग, दीज आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बट समटाइम वी डील इन रियल एसेट्स. रियल एसेट्स के अंदर आप समझते हैं, लेट्स सपोज आपने एक हॉस्पिटल के लिए एक्सरे मशीन परचेज करी. अब किसी वजह से वजूहत की वजह पे आपको उसको सेल ऑफ करना पड़ रहा है. आप यू आर गोइंग टू क्लोज योर बिजनेस, यू आर गोइंग टू क्लोज योर वन यूनिट. So and that unit you are basically selling out your all the equipments. So could you think that के वो जो आपका एक्सरे मशीन है वो आप आज किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे लगाएंगे and then immediately the customer will reach you and then say that के please give me whatever amount you are required, I can pay you. It doesn't happen. तो आपको क्या करना पड़ता है? You have to wait, you have to use some specific channel to sell out your goods, or at those channels are required specific commissions. तो ये जो तमाम प्रोसेस है जो आपको एक एसेट को, एक इक्विपमेंट को कन्वर्ट करने में टाइम ले रहा है कैश में, और आपकी वैल्यू को डैमेज भी कर रहा है, और अदर एक्स्ट्रा फंड यू आर आल्सो रिक्वायरिंग, दैट सेज दैट कि योर एसेट्स आर इलिक्विड, आर लेस लिक्विडिटी. तो अगर जो करंट एसेट्स वो एसेट्स कहलाएंगे जिनको हम एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये जो फाइनेंशियल टर्म में हम बात करते हैं तो वी कैन से दैट अकाउंट्स रिसीवेबल. अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या है कि जैसे लेट्स सपोज यू आर लिविंग इन अ हाउस एंड यू हैव टू पे सम लायबिलिटीज, यू हैव टू पे सम यूटिलिटी बिल्स. तो आपने देखा कि बच्चों के स्कूल के फी वाउचर्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है. ये तमाम वो एसेट्स हैं जो कि आपके लिए लायबिलिटी है, लेकिन जिसने आपको ये इशू किए हैं उसके लिए ये अकाउंट रिसीवेबल है, तो ये उसके लिए एसेट्स हैं. तो आपको ये विद इन 1 मंथ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के साथ विद इन ड्यू डेट पे करने होते हैं, और अदरवाइज यू हैव टू फेस सम कॉन्सिक्वेंसेस. तो आपको ये लग रहा है कि ये जो कंपनी ने आपको एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल जनरेट किया है, ये कंपनी के अकाउंट के लिए एक करंट एसेट है, क्योंकि वो इसको अपने कैश में कन्वर्ट कर लेगा with a short period of time, within a 1 year of the time. Similarly, अगर कंपनी की कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं और उसने कई जगह इन्वेस्टमेंट किया है और वो इन्वेस्टमेंट की जो म्याद है, वो फिक्स डिपॉजिट है या जो भी है, वो विद इन 12 मंथ्स है, तो अब वो उस कंपनी के तमाम इन्वेस्टमेंट्स को, उन तमाम एसेट्स को दे विल कंसीडर्ड एज ए करंट एसेट्स. तो if the current asset is clear, so now we can say that clarity is required on the net working capital. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और हम आगे जाके बात करेंगे कि हाउ वी कैन असेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ स्पेसिफिक फर्म. देखिए, एक तो होती है हमारे पास मेडिकल हेल्थ, इसी तरह से जो फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं वो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को भी मेजर करते हैं, और देयर आर सम टूल्स by which they can measure the financial health of the firm, establishment, in any institution where the financial payments or transactions are being done. जैसे net working capital, a liquidity measure equal to the current assets minus the current liabilities. इसका मतलब क्या है कि current liabilities हमने भी इससे पहले पढ़ी थी,
वही बता रही थी कि वो तमाम लाइबिलिटीज यू मस्ट हैव टू पे बैक विद इन 1 ईयर, और करंट एसेट्स वो तमाम एसेट्स हैं, वो तमाम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यू कैन कन्वर्ट, यू कैन गेट into the cash within 1 year, means current assets are in the favor of the establishment and current liabilities, that's mean you have to pay back. तो अगर मुझे कहीं से पैसे मिलने की उम्मीद है, वो अमाउंट मैं माइनस करूंगा कि वो पैसे जो मुझे भी किसी ना किसी को देने हैं. तो अगर if I can calculate the net working capital, so we can assess the financial health, basically current financial health of the company, कि क्या फर्म सही डायरेक्शन में मूव कर रही है, फर्म को लिक्विडिटी चैलेंजेस का सामना तो नहीं है. So one example I'm going to share you. Uh, let's suppose in a hospital, your total current assets are 54 million, 54 million, and your current liabilities are 15 million. So you will just subtract 54 million minus 15 million and you will get the 38 million के around आपको जो है आपका net working capital है. यानी कि ये क्वेश्चन है. This question can be used to survive you and you can develop your business in the short term. क्योंकि ये आपके पास आपने लाइबिलिटीज निकाल दी हैं, तो अब आपके पास जितना भी पैसा बचता है ये सम सॉर्ट ऑफ इक्विटी है, सम सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट है, सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट है. तो मे बी कि दिस प्रॉफिट विल बी यूज फॉर द फर्दर डेवलपमेंट एंड टू पे बैक द लॉन्ग टर्म डेट्स. तो ये बात की डिसीजन है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा खासा आपके पास नजर आ रहा है. लेकिन अगर ये डिफरेंस, ये क्वेश्चन, ये कॉरिडोर मिनिमाइज होता जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आप शॉर्ट टर्म में बिजनेस को फ्लेक्सिबल नहीं है रन करने में. तो दिस इज द concept of the net working capital. Okay, so current assets, those can be converted into cash within the 1 year, but in the long term investment, what happens? The second major assets category after the current asset is the long term investments, which reports the amount of the organization has invested in the long term maturities exceeds 1 year. But you cannot say that कि मैंने इन्वेस्टमेंट तो कर रखी है, let's suppose 2 million rupees की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेकिन it is a long term investment and it will be returned after 3 years. तो मैं अपने पास जो उसको एज एसेट्स तो शो करूंगा, लेकिन मैं इनको नेट वर्किंग कैपिटल में शामिल नहीं करूंगा. सिक्योरिटी such as a stock, bond represent the claim, business cash flow. Financial assets are purchased within the expectation of the receiving the future payments. So these are the financial assets. और ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर हमने स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सब बातों की बात करी है, जो हमारे पास एग्रीमेंट्स होते हैं, या इसमें कमर्शियल पेपर्स भी हो सकते हैं, इसमें प्रोमिसरी नोट्स भी हो सकते हैं, ऑल आर द टर्म्स. बट other than the financial assets, there are some specific assets. These are called the real assets. And the real assets we usually consider as the buildings, piece of the diagnostic equipments, and other potential future cash inflows. तो physical assets जो tangibles हों, बहुत simple understand करने में, और अपनी मालियत रखते हों, अपनी worth रखते हों, these are the called the real assets. So we have completed liabilities, means short-term liabilities and long-term liabilities. We have completed assets, mean current assets and the long-term investments. Now we are going to discuss the concept of depreciation, and we also discussed in the last class depreciation के depreciation जो है वो हमने पढ़ी भी थी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने कैलकुलेट की थी, लेकिन depreciation का concept तो हमने देख लिया, लेकिन अब how it will be used in the balance sheet. तो we can say that कि depreciation जो होती है वो यकीनन जब किसी की सैल्वेज वैल्यू होती है और यूजफुल लाइफ होती है, यूजफुल टाइम लाइफ और सैल्वेज वैल्यू के मुताबिक हम स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं. यानी कि ये वो अमाउंट होगी जो बताएगी कि हर साल, यानी कि हर अकाउंटिंग पीरियड में आपका लिस्टेड एसेट किस अमाउंट के साथ डेप्रिशिएट हो रहा है. और एक यूजफुल टाइम लाइन है, यानी कि जो यूजफुल टाइम होता है किसी भी एसेट्स का यूज करने का, उस वक्त तक वो जाके वहां पर वो एंड अप हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और सैल्वेज वैल्यू उसका वहां पर स्टैंड करेगा. तो वो जो अमाउंट है जिससे वो डेप्रिशिएट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड योर स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन. और मैंने आपको ये भी बताया था कि वी कैन कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन बाय द अदर मेथड एज वेल, बट द कॉन्सेप्ट विल बी डेप्रिसिएशन की. डेप्रिसिएशन होती क्या है? डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिफरेंस इज दैट कि जब आपने एक साल पे डेप्रिसिएशन अप्लाई करी तो वो उस स्पेसिफिक पीरियड की डेप्रिसिएशन ऑफ ए स्पेसिफिक रियल एसेट है. लेकिन अगर आपका ये एसेट्स परचेज हुए 5 years has been spent and you have used that equipment 5 years, तो अब उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो एक्यूमुलेट होती चली आएगी, जमा होती चली आएगी. तो इसको हम अपने बैलेंस शीट में कैसे कर सकते हैं? एग्जांपल आपके सामने. लेट्स सपोज द Sunnyvale reported accumulated depreciation is 29 million. इसका मतलब जो उसका बहुत ज्यादा इक्विपमेंट था पूरे हॉस्पिटल का, वो $29 million की उसकी अभी तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि 3 साल, 4 साल, 5 साल पीछे वो जमा करते हुए आए,
कुछ एसेट्स नए थे, कुछ एसेट्स पुराने थे, कुछ पे ज्यादा डेप्रिसिएशन अप्लाई हो गई, किस पे कम हुई, लेकिन एक्यूमुलेटेड में एक स्टेटमेंट आ गया कि भाई कंपनी की टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि वो इक्विपमेंट वहां एग्जिस्ट जरूर कर रहा है, बट इट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय द वैल्यू ऑफ द $29 million एज ऑफ दिसंबर 31st, यानी कि ये अकाउंटिंग पीरियड है दिसंबर 31st तक, यानी कि 19 तक उसने यहाँ तक इतनी डिस्प्रिसिएशन कर ली है. एंड नाउ फॉर द ईयर ऑफ द एंडेड December 31st 2020, Sunnyvale reported the 6 million depreciation again because कि अब कुछ इक्विपमेंट और पुराने हो गए, कुछ थोड़े नए वाले थे वो भी पुराने हो गए. That means the 6 million depreciation will add in the previous one. तो स्टेटमेंट कैसे बनेगा कि accumulated depreciation as of December 31st 2019 and depreciation expenses for the ended year 31st 2020, and we will add the both depreciation and we will say that now the accumulated depreciation for the 2020 is not 6 million, is 36.099 million because कि हमने previous year तक की depreciation को भी इसमें add किया. तो this is the concept of the accumulated depreciation. अब accumulated depreciation हमें क्या चीज कैलकुलेट करने में काम देती है? We can use the concept of the accumulated depreciation to find out the net property and equipment. इन प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट तो आपको पता है ये रियल एसेट्स है ना, ये फिजिकल एसेट्स है. अपने रियल एसेट्स में से अपनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को निकाल लोगे तो वो आपके कहलाएंगे नेट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट. अच्छा, व्हाट हैपेंस कि अ बिजनेस लॉन्ग टर्म एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग and equipment usually labeled the net property asset. How? The land value is 2.9 million and it was earlier 2.02 million. So building and equipments in aggregate it is 85 million and 77 millions. Okay, but you calculated earlier the depreciation was 29 million. हमने पीछे देखा कि 29 थी, उसमें 6 million का एड ऑफ किया तो अब 36 million हो गया. तो टोटल जो उसकी अमाउंट थी उसमें से हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमारी जो इन एक्चुअल 2019 में हमारी लैंड एंड इक्विपमेंट की जो वर्थ बन रही है वो 79 मिलियन की बन रही है, लेकिन वी सब्ट्रैक्टेड द डेप्रिसिएशन 29 मिलियन एंड देन वी कैन क्लेम दैट कि जो हमारी टोटल वर्थ है लैंड एंड इक्विपमेंट की वो है 49 मिलियन इन 2019 एंड 52 मिलियन इन 2020. तो इसका मतलब ये कि सब इक्विपमेंट जो है वो आपने नए परचेज किए होंगे, कुछ और चीज की होगी जिसकी वजह से आपकी इक्विपमेंट की वर्थ बड़ी होगी, लेकिन साथ साथ डेप्रिसिएशन भी उस पर अप्लाई हुई और आपके पास जो नेट वर्थ है उसके अंदर से वो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर लिया. तो ये कॉन्सेप्ट है नेट इक्विपमेंट, नेट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट का. So now we are going to discuss another term is the default or defaulter. What is default? Default means what is defaulter? When a borrower fails to make promised debt payment. Someone has promised that he or she will pay back the contracted debt, but he or she is not giving. Mean a company is not paying back the contracted debt. So that means the company has defaulted, as it has declared as a defaulter. Technical default occur when the borrower fails to meet one of the restrictions. Technically तो इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर आपने 4 कंडीशन लगाई है कि आप इस टाइम से इस टाइम तक देंगे और ये नहीं करेंगे और वो करेंगे, it depends on the legal agreement, loan agreement. तो उसमें तो आप कर सकते हैं कि technically you have been defaulted. So लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको not technical, you want to declare as a defaulter, तो आप mean that you are unable to pay back your contracted loan. अब आता है probability of default. Probability of default, it is called the default risk. यानी कि जब risk आता है ना, risk is the chances, risk is the probability to something happen. What is going to be happen? Default is going to be happen. Default going to be happen means what are the chances that you will not pay back the promised amount, contracted debt. The probability of fail to pay contracted debt payment. तो ये अगर आप निकाल लें किसी भी फर्म की 0.2 20% है, 0.25 25% है, 0.31 31% है, तो 31% चांसेस है कि ये डिफॉल्ट कर जाएगा. So the 31% is called the default risk. Now another term is the net assets and equity. अब equity के बारे में हमने ऊपर जो बहुत डिटेल में डिस्कस किया assets and liabilities को, and we learn in the start of the lecture कि one of the important component of the balance sheet is equity. And equity जो बिल्कुल सिंपल डिफाइन होती है कि दिस इज डॉलर वैल्यू ऑफ द बिजनेस एसेट्स आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग द बिजनेस लायबिलिटी. ये प्योर प्रॉफिट है, ये प्योर ग्रोथ है फर्म की, जो
बेसिकली लायबिलिटीज एडजस्टेड है बैलेंस शीट। और हमने जो पूरी जो पीछे आपको टर्म सिखाई इसमें मुख्तलिफ चीजें थी, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, डेट हो गया, लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट, एंड देन एसेट्स, net property, depreciation, all the concepts, all the terms will be used to develop a balance sheet of a firm. So the first component of the balance sheet is the current assets. We can see here. In the current assets, you can see that cash and cash equivalents, mean cash एक firm hospital के पास मौजूद है, and short term investment उसने कहीं ना कहीं investment कर रखी है लेकिन short term है. Short term I have told you this is that will be converted into cash within 1 year. And net patients account receivable. Account receivable is something you will get from the patients, from the that's mean from your customers. In hospital, patients are the customers. और इन्वेंट्रीज भी आपने पेमेंट कर ली हैं, उनकी जो मालियत है that will be counted as a assets and assets in the form of the current assets क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में यूज हो रहा है. अदर आर द लॉन्ग टर्म एसेट्स. लॉन्ग टर्म एसेट्स मीन के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कि आप अपने पैसे को री इन्वेस्ट कर चुके हैं मुख्तलिफ जगहों पे और वो आपके पास या तो उस शक्ल में है या आपके पास किसी न किसी इक्विपमेंट की शक्ल में है. दैट विल रिक्वायर द टाइम टू कन्वर्ट मोर देन 1 ईयर. यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स में हमने दो चीजें देखी थी ना, कि आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो या लॉन्ग टर्म आपके पास कोई एसेट्स हो जिसमें आपको टाइम लग रहा. एंड नेट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट में आपके पास वो तमाम चीजें आ जाएंगी जो रियल एसेट्स है. लेकिन नेट, व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड नेट, बिकॉज these are basically depreciation adjusted, accumulated depreciation adjusted है. तो अगर हम अपनी करंट एसेट्स यानी 54 मिलियन और हम अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स को और अपने नेट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट को एड अप कर लें यानी 54, 48 एंड 52, तो वी विल गेट द टोटल एसेट्स. अब ये जो एसेट्स हैं ये मस्ट बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट, लायबिलिटीज प्लस इक्विटी. एंड liabilities में whatever you have to pay in the short term within a one accounting period, notes payable, account payable and accrued expenses, ये मैंने सारा डिटेल में डिस्कस किया. salaries, utilities and all of your credit amount accrued expenses में आ जाएगी. account payable that's mean you have to pay due to different contracts. and notes payable ये आपके पास the type of the debt agreements है, you must have to pay. and then if you want to pay all the expenses in the short term, the 15 million. कुछ आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रखी, लॉन्ग टर्म डेट्स ले रखे. लॉन्ग टर्म डेट का मतलब ये है कि आपने उसकी शेड्यूलिंग कर रखी है और अकॉर्डिंग टू शेड्यूल दिस ईयर यू हैव टू रिटर्न बैक 85 मिलियन. तो इन दोनों को एड अप करेंगे तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी 100 मिलियन के अगेंस्ट यू हैव टू रिटर्न बैक. और जब आपके पास एसेट्स की तादाद थी 154 मिलियन की, वट एवर यू हैव टू गिव सैलरी की शक्ल में, इन्वेस्टमेंट की शक्ल में, लोन को पे बैक करना है शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म, वो आपको 100 मिलियन बचा. तो जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट में से लायबिलिटीज निकल गई तो आपके पास जो टोटल अमाउंट बचेगी वो बेसिकली इट इज योर नेट इक्विटी, नेट एसेट्स, यानी कि असल आपका जो बिजनेस की वर्थ है वो यहाँ खड़ी है 54 मिलियन पे. सो इक्विटी अगेन, जो आपने जो स्टार्ट ऑफ द बिजनेस पे जो इन्वेस्टमेंट हुई होगी वहां से पैसा आया होगा, कुछ आपने अर्न किया है, वो आपके पास ऑल अमाउंट इज रिफ्लेक्टिंग इन द इक्विटी. और इसी तरह से जो हमने देखा था कि जब हम अगले साल की जब हम बैलेंस शीट डेवलप कर रहे होंगे तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारी उस इक्विटी में से हमने देखा था कि हमें जो है वो डिविडेंड पे करना होता है क्योंकि ये आपका असल प्रॉफिट है ना. तो जिन लोगों ने आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो आपके ओनर्स हैं, उनको आपने पैसे देने होते हैं. तो यू हैव टू, इसमें हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा कि आपके पास जो टाइप्स ऑफ दी स्टॉक्स हैं यानी कि प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक, और वो देने वो आपने डिविडेंड माइनस कर लेंगे और इसमें ये होगा कि फिर आप डिसाइड करेंगे कि ये हम डिविडेंड पे ऑफ कर देंगे और इस अर्निंग में से हम रिटेन अर्निंग यानी कि कुछ इक्विटी हम सेव करेंगे जो कि बिजनेस की सपोर्ट के लिए फॉर द नेक्स्ट ईयर दोबारा बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगी. सो ये जब आपने तमाम चीजें बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो नाउ अगेन an important and the crux of the total lecture is the debt ratios. It will basically tell you the financial health. One of the indicators we have learned in the previous slides is the net working capital, जिसमें short term liabilities and short term assets की बात हुई. अब हम देखते हैं कि we have two debt ratios, those are very commonly used, and उसको हम यूज करके अपनी डेट पोजीशंस को डिक्लेयर कर सकते हैं कि फर्म में डेट पोजीशंस कैसी हैं. A debt utilization ratio measures the proportion of the debt versus equity, और ये बता सकता है कि आपकी कंपनी की डिफॉल्ट पोजीशन कैसी है, कंपनी की जो फाइनेंसिंग है वो कितनी हद तक बोरोइंग पे डिपेंड करती है. इसको देखते हैं कैसे.
So first is the debt ratio, and debt ratio can be calculated by the two terms, two numbers, two figures are required from the balance sheet: total liabilities and total assets. हमने बैलेंस शीट में डिस्कस किया कि टोटल लाइबिलिटीज बिल्कुल क्लियरली यहाँ लिखी हुई होती हैं, और टोटल लाइबिलिटीज के बाद टोटल लाइबिलिटीज यहाँ पर आ जाएंगी जब हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को जमा करेंगे, 100 के बराबर आ रही है, और टोटल एसेट यानी कि 154 और 100 को अगर हम आपस में डिवाइड कर दें, यानी टोटल लाइबिलिटीज ऊपर रखें और एसेट्स नीचे रखें, और एसेट्स यूजुअली ज्यादा होते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि डेट रेशियो उस फर्म का क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस करते हैं, इंटरप्रिटेशन को सीखते हैं। दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल। Sunnyvale's debt ratio at the end of the 2020 was total liabilities divided by total assets. उसने total liabilities थी 100 की जो मैंने आपको बताई, और 154 का उसका total asset था, यूजुअली assets ज्यादा है, तो the debt ratio is 0.65 means 65%. यानी कि how can we interpret it? The ratio reveals that each dollar of the asset was financed by 65% of debt, by inference 35% equity. यानी कि जो debt से नहीं होगा वो equity से होगा, वही आपकी असल मालियत होगी, वो असल ग्रोथ होगी। क्योंकि डेट से अगर आपकी कोई चीज फाइनेंस्ड है तो यू मस्ट हैव टू बी केयरफुल कि यू हैव टू रिटर्न बैक, अगर आपने वो चीज आपके पास स्टिल मौजूद भी है तो वो लेट्स मीन द लो इज द बेटर, मीन डेट रेशियो, हाउ कैन वी इंटरप्रेट द लो इज द बेटर? जितना डेट रेशियो लो होगा, यानी 65% के बजाय अगर किसी और फर्म का 55% आता है, तो हम कहेंगे कि उसकी एसेट्स जो है वो कम से कम फाइनेंस्ड है डेट के साथ, तो लो इज द बेटर। Like this is not only the indicator just which can say that के ये बेहतर है। अगर किसी फर्म के नंबर ही कम हो, पैसे ही कम हो, तो किसी का हो सकता है डेट रेशियो अच्छा आ जाए। तो इसलिए we will not depend on the one ratio, we will have so many ratios to declare the financial health, but कि अभी हम आइसोलेशन में हर इंडिकेटर को समझने की कोशिश करते हैं कि हर इंडिकेटर्स को किस तरह से बिहेव करना है। तो we understood that the debt ratio shows that the low is better, and 65% is the meaning of 65% means 65% assets are financed by the liabilities, and the remaining part, 35%, is financed by the equity. Okay, so we are going to compare the debt ratio of a Sunnyvale from 2020 to 2019, and the same formula is used to calculate the debt ratio of 2019. तो 2019 में जो debt ratio आ रहा है वो 60% आ रहा है, और 2020 में जो debt ratio है the same company is 65%. इसका मतलब क्या है कि the low is better पे Sunnyvale has the progress or the worth financial health of the Sunnyvale company has declined, क्योंकि 60 to 65% यानी more is not suitable, यानी low is better। तो अगर ये more हो रहा है, अगर ये increase कर रहा है, तो this means कि उसकी financial health is decreasing. The other concept is the current ratio. Here we did not calculate the value of the current ratio. We can simply calculate from here due to the use of the Excel. So other is the current ratio, and current ratio, the is very clear by the name current, mean we will use the both terms assets and liabilities in the form of the current. अच्छा, सेकंड आप इसमें देख सकते हैं कि वेरी इंटरेस्टिंग कि इसमें इस टाइम आपके पास ये जो नंबर्स हैं ये रिवर्स हो गए, यानी कि एसेट्स टॉप पे आ गया न्यूमरेटर में, एंड लाइबिलिटीज जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया, बिकॉज कि इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी डिफरेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। And current ratio is usually basically calculated for the firm जब हम कंपनी की करंट फाइनेंशियल हेल्थ को जानना चाहते हैं कि वो शॉर्ट टर्म में, जैसे नेट वर्किंग कैपिटल था, शॉर्ट टर्म में वो कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो नेट वर्किंग कैपिटल बेसिकली द सब्ट्रैक्शन, सो इट इज द एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, एंड एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट समटाइम मिसलीड, सो we must have to be understand on the relative concept. relative concept पे हम देखेंगे कि हम पर यूनिट डॉलर में बात कर सकते हैं कि पर यूनिट डॉलर पे फर्म कैसे परफॉर्म कर रही है, एंड relative concepts are also very important in this sense के relative concepts can be compared to one firm to other firm. In the absolute you are little bit hesitate to compare that कि अगर उसका स्केल बराबर नहीं होगा तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। But suppose we have the current assets and we can note the value of the current assets from here. क्या बनते हैं टोटल करंट आपके 54.3 मिलियन रुपीस। हम यहाँ लिख लेते हैं कि करंट एसेट्स यानी कि CA is equal to 54.3 million. And, okay, and what are the current liabilities यानी कि CL, and if we see here what is the value of the current liabilities, तो करंट लाइबिलिटीज पे आपको यहाँ रुकना होगा, टोटल लाइबिलिटीज पे नहीं जाना, 15 मिलियन 15.4 मिलियन।
So 15.4 को अगर हम देखते हैं तो yes, so what is the formula of current ratio, which is current assets divided by current liabilities, and we will calculate and we'll try to interpret. So CR, current ratio means total assets will be divided by total liabilities, and the answer is 3.59. अब यहाँ पर आंसर फ्रैक्शन में नहीं आया क्योंकि आपके एसेट्स यूजुअली ज्यादा होते हैं और वो न्यूमरेटर में चले गए, तो ये आंसर 1. जिस तरह से हमने डिसाइड किया था कि इन दी डेट रेशियो लोअर इज बेटर, but we decided here the current ratio higher is better because ये आपको शो करता है कि to pay the liability of $1 you have a $3.5. The tendency to pay the liability of the $1 you have $3.5. मतलब अगर हर डॉलर के अगेंस्ट, हर एक डॉलर के अगेंस्ट, हर एक रुपये के अगेंस्ट आपके पास 3.5 रुपीज अवेलेबल हैं, तो जितने ज्यादा आपको लायबिलिटी के अगेंस्ट पैसे मौजूद होंगे पे करने के लिए, उतना अच्छा क्वेश्चन होगा आपके पास, एंड यू कैन से दैट कि हम इजीली बिजनेस को रन कर सकते हैं. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द करंट रेशियो. सो बोथ रेशियोज कैन बी कंप्यूटेड. डेट रेशियो लोअर इज बेटर, करंट रेशियो हायर इज बेटर, एंड नेट वर्किंग कैपिटल हायर इज बेटर. तो ये तीन चारों चीजें लेके आप बैलेंस शीट के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को यूज करके वी कैन सिंपली जज दैट के हाउ कैन वी असेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ फर्म. So this is all about the balance sheet, and we learned something liabilities, assets, equity, and how the debt ratios work. So if you learned from our lectures, please subscribe to our channel and like our videos. Thank you.